Starting with the question. Clean India Public Limited was formed with capital of rupees 10 lakhs divided into 10,000 shares of 100 each. Of these, 2,000 shares were issued to vendors as fully paid in payment of purchase of office premises. Okay, मतलब पब्लिक को नहीं इशू किए ये शेयर्स, जिन्होंने हमारी बिल्डिंग बनाई है उनको एज कंसिडरेशन हमने 200 शेयर्स दिए हैं. सो दिस इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो अलग से हमको स्पेसिफाई करना है कि शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, नेक्स्ट 6,000 shares were offered to public, out of which 5,000 shares were applied and allotted. Okay, इशू किया 5,000 लेकिन इशू किया 6,000. आपने 6,000 शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया है? 5,000 शेयर्स ही किया है. वह अप्लाइड एंड अलॉटेड. ₹10 पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड 25 ऑन अलॉटमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन मनी फर्स्ट 10 है एंड देन 25 ऑन अलॉटमेंट. द बैलेंस वॉज नॉट येट कॉल्ड, मीन्स 35 रुपीज तो कॉल किया है. 100 है ना फेस वैल्यू, 100 माइनस 35 दैट इज 65 इज not yet called. All the money called up was duly received with the exception of allotment money of 600 shares. So application money तो आया क्योंकि उसने अप्लाई किया था, लेकिन 600 शेयर्स का जो जिसने अप्लाई किया अलॉटमेंट मनी उससे नहीं मिला. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट इज कॉल्स इन एरियर्स, कि हमको 600 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं मिला. सो दैट इज कॉल्स इन एरियर्स. कैलकुलेट authorized, issued, subscribed, called up and paid up share capital and also calls in arrears and uncalled capital. Okay, so let's start with the working. First thing, authorized capital. So the first thing is authorized capital. कितना है authorized capital? See, clearly given in the question, it is 10,000 shares of rupees 100 each. So 10,000 shares of 100 each, that is 10 lakhs. So this is your authorized capital. Now second, issued capital. So let's see issued capital. Of these, 2,000 shares were issued to vendors as fully paid in payment of purchase of office premises. So 2,000 shares आप बोलेंगे कि that is issued capital but issued for consideration other than cash. वो अलग से specify होगा यहाँ पर. And 6,000 shares were offered to public, मतलब 6,000 शेयर और आपने पब्लिक को ऑफर किए हैं. सो द इश्यूड कैपिटल विल बी कितना? टोटल 8,000 शेयर्स, आउट ऑफ इज 6,000 इज फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश, 2,000 शेयर्स ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज. सो योर इश्यूड कैपिटल विल बी 8 lakh rupees फॉर कंसिडरेशन other than cash. 2,000 shares. Okay, so this is 8 lakh is your total issued share capital. Okay, 8 lakh तक हमने issued किया. Now comes question में subscribed capital. Subscribed share capital. 5,000 shares were applied and allotted. Okay, so 6,000 में से apply ही 5,000 shares हुए हैं. So 5,000 ये plus 2,000 जो other than cash दिए थे. So 5,000 plus 2,000, that is total 7,000 shares has been subscribed. तो उसमें से कितना? 7,000 into 100 was the face value. So total subscribed share capital comes up to 6,000 में से 1,000 subscribe नहीं हुआ है.
So only 5,000 and 2,000 for consideration other than cash plus 2,000 to total 7,000 shares into 100 rupees gives you 7 lakh. So this is your subscribed share capital. Okay, next point. Now called up एंड पेड अप शेयर कैपिटल. तो सबसे पहले सिर्फ कॉल्ड अप देखो कि कितना अमाउंट एक्चुअली कॉल्ड अप है. सो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. देखो जो 2,000 शेयर्स थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसका तो पूरा का पूरा 100 है. सो फुल 100 ऑफ दैट कम्स अप टू 2 लाख. दैट इज जो वेंडर को दिया था फॉर मेकिंग द बिल्डिंग प्रेमाइसिस, दैट इज ऑफिस प्रेमाइसिस. ओके, एंड बाकी कितने शेयर्स बचे थे? 5,000 शेयर्स. 6,000 में से 5,000 सब्सक्राइब हुए, तो सब्सक्राइब में से ही तो कॉल्ड अप होगा कि इतने शेयर्स अब एक्चुअल में इतना अमाउंट कॉल्ड अप कर रहे हैं. सो सारे 5,000 शेयर्स इनटू व्हाट अमाउंट? सी 10 इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड 25 ऑन अलॉटमेंट. यानी कॉल कितना किया? एप्लीकेशन के टाइम 10, अलॉटमेंट के टाइम 25. तो सो टोटल 10 प्लस 25, 35 हैज बीन कॉल्ड अप फॉर 5,000 शेयर्स. दैट कम्स अप टू 1,75,000. सो द टोटल इज 3,75,000 is your total called up share capital. Now next, पेड अप शेयर कैपिटल उन्होंने पूछा है आपसे. सो पेड अप शेयर कैपिटल. कितना पेड अप हुआ है? देखो 2,000 का पूरा 100 है. सो 2,000 का पूरा 100 दैट इज 2 lakhs. देन 5,000 में मैंने 35 मंगाया. सो 5,000 का मुझे 35 रुपीज, 25 प्लस 10 35, दैट कम्स अप टू 1,75,000. एंड अभी ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. ऑल मनी कॉल्ड अप वॉज ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि जितना भी कॉल किया शेयर होल्डर्स ने सब पे किया, एक्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 600 शेयर्स. सो 600 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं आया. अलॉटमेंट मनी कितना है? 25 ऑन अलॉटमेंट. सो कुछ नहीं है ये, इट इज जस्ट कॉल्स इन एरियर्स कि इतना पैसा नहीं आया, तो बस वो अमाउंट रिड्यूस करना है टू फाइंड आउट द पेड अप शेयर कैपिटल. सो 600 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 10 आया, सिर्फ 25 अलॉटमेंट नहीं आया. सो इनटू 25 इतना हमको लेस करना है बिकॉज दिस इज नथिंग बट कॉल्स इन अरियर्स. So 600 into 25 is 15,000. So वो लेस करना है and your paid up share capital comes up to 2 lakhs plus 1,75,000 minus 15,000, that is 3,60,000. Paid up share capital. Now next is your uncalled share capital. Uncalled शेयर कैपिटल. देखो 5,000 शेयर्स थे, 5,000 शेयर्स, उसमें से आपने 10 प्लस 25, 10 ऑन एप्लीकेशन एंड 25 ऑन अलॉटमेंट, वो आपका टोटल यू हैव कॉल्ड. सो 35 कॉल किया है. सो एंड द फेस वैल्यू इज 100. सो 100 माइनस 35 विल बी योर अनकॉल्ड अमाउंट. सो 65 टोटल एक शेयर पे 5,000 वाले में अनकॉल्ड है. और जो 2,000 शेयर्स थे उसका तो पूरा का पूरा 100 उसी समय हो गया. सो दैट वी आर नॉट कंसर्न व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग अनकॉल्ड शेयर कैपिटल. एक शेयर पे 65 रुपीज अभी तक कॉल करना बाकी है ऑन दोज 5,000 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. सो योर टोटल ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कम्स अप टू 5,000 into 65, 3,25,000. So this is how you calculate your different types of share capital. And what is the calls in arrears? 600 shares का 25 रुपीज एप्लीकेशन मनी आया, सिर्फ अलॉटमेंट मनी नहीं आया. तो 600 into 25, 15,000 is your
call scenarios.